back again, all of you, in Vedika's tutorial. First of all, I want to say a very big thank you, all of you, for giving such a big support that in only 2 days I got like 300 plus views. So it's a very big honor for me. Now, as from the topic, here I am with the chapter real number, and the topic is rational number. So as you can see here on the board that I have written 4 points. The topic is rational number, but before defining what rational number is, let's recall few of the important points which you have might be studied in grade 7, 8 also, but let's recall for our clearance. Natural number. What is natural number? I'm explaining all these in brief only, okay? So I'm just giving a short review on this, what natural number is. All the counting numbers, listen carefully. मैं बात कर रही हूँ सिर्फ counting numbers की. All the counting numbers are called as natural number. All counting numbers, okay? All counting numbers. Counting numbers में क्या आते हैं? Counting numbers is starting from 1. That is 1, 2 and so on. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are counting numbers. So all counting numbers called as natural numbers. All counting numbers are called as natural numbers. Now point 2, whole numbers. नेचुरल नंबर में सिर्फ हमारा काउंटिंग नंबर्स आता है, बट व्हाट अबाउट होल नंबर्स? इन होल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो. होल नंबर भी हमारा नेचुरल नंबर ही जैसा है, बस हमारे नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो जाता है तो वो होल नंबर बन जाता है. ठीक है, होल नंबर में ऑल काउंटिंग numbers, all counting numbers plus 0. All counting number plus 0 together forms whole numbers. Okay. So you see the difference between natural number and whole number? There is a little difference, and the difference is of the digit 0. यहाँ सिर्फ 0 डिजिट का डिफरेंस है. 0 ऐड ऑन हो जाने से हमारा नेचुरल नंबर होल नंबर बन जाता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज इंटीजर्स. व्हाट इज इंटीजर्स? count natural number is all about counting number which is positive. Okay, positive counting numbers with 0. Now what about integers? All the counting numbers and its negative form along with 0. Counting number plus 0 plus negative counting number. They three form the category of integers, like 0, okay, then the positive numbers and the negative numbers as well. Okay, negative numbers, positive numbers and 0, all the three together forms integers. Fine. So as these 3 points are clear to you now, so let's proceed towards our topic, that is rational number. एक सेंटेंस मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, उसे आप याद करिएगा, and I bet you that you will remember this throughout your life. Okay, see how easy this is. Any number in the form p by q. कोई भी नंबर जिसका फॉर्म p by q रहे. p by q का मतलब क्या हुआ? 2 by 3, 5 by 7, 11 by 15, 50 by 44, like this. Any number in the form p by q where p and q are integers. फॉर्म होना चाहिए p by q का, एंड p एंड q क्या होंगे? ना ही नेचुरल होंगे ना ही होल होंगे. क्या होंगे?
इंटीजर्स होंगे, मीन्स दे माइट बी नेचुरल ऑल्सो, दे माइट बी whole number also, okay, and natural also. So p and q, where p and q are integers, and the most important is q is not equal to 0, और q जो होगा हमारा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। p by q का फॉर्म होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट p and q इंटीजर्स होने चाहिए, एंड थर्ड पॉइंट q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया हमारा फुलफिल कर रहा है कोई भी गिवन नंबर, दैट मीन्स दैट इज अ रैशनल नंबर। सो देयर आर ओनली 3 criteria which fulfill the condition of rational number, that is it should be in the form p by q, p by q should be integers, and q should not be equal to 0. Okay, so this is the rational number, in which this is the first chapter of our grade 10, okay, and always we heard from our childhood that our basics must be clear. That is why I am here to clear your all doubts regarding the basics, okay. So क्यों हमारा 0 क्यों करेंगे। अब बात आती है हमारी रेशनल नंबर के बाद कि हम इसको कैसे मतलब शो करेंगे कि वेदर द नंबर जो हमारा टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब हमारी बात आती है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ। तो यहाँ 2 पॉइंट ध्यान देने लायक है। फर्स्ट इज आवर टर्मिनेटिंग, व्हाट इज टर्मिनेटिंग एंड व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज वेरी स्मॉल टॉपिक, आई विल give some examples related to terminating and non-terminating. What is terminating? First of all, terminating means this is the form, it should be in the form p by q, and p by q should be in the form 2m into 5 and 2m into q का हमारा फॉर्म क्या होना चाहिए, q का हमारा फॉर्म होना चाहिए यहाँ पे 2 to the power m into 5 to the power n, ठीक है। अगर हमारा फॉर्म q का रहता है 2 to the power m into 5 to the power n, that means it is a terminating, and if q अगर हमारा इक्वल नहीं है इस फॉर्म के, so that will be in the category of non terminating. तो ये तो एक बेसिक मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला के रूप में। नाउ दिस पॉइंट शुड बी क्लियर फ्रॉम आवर एग्जाम्पल, सो लेट्स क्विकली गेट proceed towards the example. So this is our example 1. The question says, without actual division, show that each of the following rational numbers is a non-terminating repeating decimal. क्वेश्चन कहने का मतलब है कि बिना ही डिवीजन किए, एक्चुअल डिवीजन जो हमारा है प्रोसेस, उसको बगैर किए हुए हमें क्या शो करना है, दैट गिवन each number is a non-terminating repeating decimal. तो अभी मैंने बताया आपको कि टर्मिनेटिंग में हमारा q का फॉर्म होना चाहिए 2 to the power m into 5 to the power n, एंड नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, इट शुड नॉट बी इक्वल, q शुड नॉट बी इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n. So चलिए देखते हैं, लेट्स प्रोसीड। 1 to 1 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3 into 3 square into 7 to the power 5. तो यहाँ पे क्लियर है कि 2, 3 and 7 are in its simplest form. Since we can say ना, the given statement is in its, ये हमारा simplest form में already दिया हुआ है, ठीक है। 2 into 3 into 7 जो है हमारा 2 into 3 into 7 जो है, ठीक है, ये हमारा simplest form में given है। बट क्या ये इक्वल है 2 to the power m into 5 to the power n के? नो, ये हमारा इक्वल नहीं है। तो हमारा इसका कंडीशन ही यही है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n. तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए वी कैन से दैट यस इट इज अ नॉन terminating repeating decimal. Fine.
नाउ अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा है 66 डिवाइडेड बाई 180। आप 10th में हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं कि बोथ द नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय द डिजिट 6. So first of all, our first step is to convert the number in its simplest form. So let's divide both numerator and denominator with 6. Okay, when we divide the number, we get numerator as 11 and denominator as 30. Okay, so the simplest form of 66 upon 180 is 11 by 30. Now what is the 30? What is the factor of 30? Factor of 30 can be written as 2 into 3 into 5. We can write it like 2 into 3 into 5, 2 into 3 6, 6 into 5 30. So this factor of 30 is 2 into 3 into 5. क्या हम 11 को किसी भी एक फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं? क्या 11 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नो. क्या 11 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? अगेन नो. एंड फ्रॉम 5 ऑल्सो वी कैन नॉट डिवाइड 11. सो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो 30 का फैक्टर है वो उसमें से एक भी फैक्टर 11 का नहीं है. तो अगेन द सेम थिंग हैपन दैट 2 into 3 into 5 is not equal to the given condition. So again we can say that the given number, that 66 upon 180, is a non-terminating repeating decimal. Okay, let's come to the second example. So this is our example 2. Express 0.32 and here recurring sign as a fraction in the simplest form. Recurring sign means repeating. This is the symbol of repeating. So the question कह रहा है हमारा कि 0.32 which is recurring number, इसे हमें simplest form में show करना है. तो how we can show it? Just see. Let x is equal to 0.32. Okay. Recurring is on both the number. हम मान के चलते हैं कि हमारा x जो है वो इक्वल है 0.32 के. तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 0. Recurring means 32 is repeating itself so many times. Yeah, so we can write it like x is equal to 0.323232 so many times. Now, what is our step? We have to multiply the given digit with 100. When we multiply both sides with 100, what we get after multiplying with 100, what we get, x into 100, 100x, and when we multiply decimal point up to 100, this becomes 32.323232 and so on. So this is our equation 1 and this is our equation 2. Now our step is that we have to subtract. On subtracting 1 from 2, we have to subtract equation 1 from equation 2. When we subtract x from 100, we get 99x as the answer. And we'll subtract 32, 0 from 32, we get here 32. So x is equal to 32 upon 99. Okay, this is the simplest form of our question 0.32 recurring non-terminating. Okay, so this way we have to write. Let's take another example. Let's see another example of the same question. Suppose that we change the question. Okay, suppose that we change the question. The question is, let's take 0.254 and another example. So this is 3-digit number, previous one is 2-digit number. Again, there is a recurring symbol. Now, again, let x is equal to 0.254. Okay, so we can write it like x is equal to 0.254254 and so on. So, first of all, we have to multiply it with 10x. When we multiply it with 10x, it will be 2.54. Okay, 54 like this.
and again when we multiply it with 1000x, it will be 254.254254 like this. Okay, so this is our equation 1 and this is our equation 2. Again we have to subtract 1 from 2. What we get? 1000 minus 10, 990x. Okay, and this will become 4 minus 2, it will become 252. Now x is equal to 252 by 990. When we divide it with 2, we get 126 by 495. 495. Again let's divide it by 2. When we divide it by 2, we get 63 by, no, we should not divide it with 2. It will be, as it is 495, we can divide it again. So it will become 5. 5 into 8, 40, and 5 into 9, 45, and 5 into 9, 45. Okay, so this way we have, when we subtract it like this, it becomes 14 by 55. Okay, when you subtract it from 9, 9 into 5, 45, 9 into 1, 9, 9 into 4, 36. Here we have divided it with 9. Okay, so in this way the simplest form of 0.254 is 14 by 55. तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर का पार्ट रहा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इरेशनल नंबर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. So bye bye for today.